Good morning, everyone. So, welcome to the first day of this internship program that we have launched for this final year, third year, and engineering students. Okay, so in this training program, we'll be just giving you a brief introduction of this new stream of mechanical that we call it as HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. So, ये field क्या होता है? What exactly it is? What exactly it is? So that we will be trying to deliver. Okay, so सबसे पहले before starting this campaign that we have started. It is under the CSR activity, and what we want that it should be uh, means the thing that we want to communicate with each and every engineer. It is that the stream of HVAC means it's a branch of mechanical. It's a branch of mechanical which is very much new into the industry, and it is required. This services, it is required each and everywhere. Okay, so that is why we have just choosing this topic to be a part of this winter internship program for the engineers. So before starting, let me introduce myself. Myself is Sakhar Ahmad. I'd be your trainer in this entire internship program. I had an experience of over 9 years in this HVAC industry. I had started my professional career from a Blue Star Channel partner, and then I moved to Clivet. It's an Italian-based chiller manufacturing company, and then I moved to Midea. It's a Chinese biggest air conditioning company, and there I was taking care for the entire North India, other SAARC countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. So, what we are more focused in 2018, we have just started this comfort design, and that comfort design deals in two segments. The first segment that we have, it is the training and development programs, and that is what we are focusing on making this India a skill India. And the second segment, that is we have a means we are also MEP consultant also, so we used to design the projects also. So what we would be trying to do, that we would be just trying to train you what we have learned from the industry. So that is what we are more focused. Okay, now let's start with uh, let's start with the topic. Those who have any queries, they can just go to chat box and revert me with your queries, so that we can try to resolve all your queries. So let's start with this program quickly, because we have some time constraints also. So let us start with that. So on your screen now, it is visible that you have to choose the right one. So this is basically this is what means your career choice. It must be that there are multiple options are there for you being a mechanical engineer. There are multiple options. Now this slide is specifically for mechanical engineers. Those who are mechanical, they can understand it in a better way. That we have, the biggest question that we face in our day-to-day life, it is what is the biggest question that we face in our day-to-day life? Anyone have any idea? What is the question that we usually face in our day-to-day life? The most common or frequently asked question, being an engineer. No, the most common question that is being asked from every second individual to us, it is about the job. Right, Mr. Rasid. It is about the job. So, in order to get a job, the most important thing that you need to choose a path, that which is the best path for you, and how you can pursue your career in that. So let us start with that. Being a mechanical engineer, what are the options that we have? So let us see the options that we have. We have multiple options here. So the first option that we have, it is your design part. That is, in that, being a mechanical engineer, you can go into the design part, where you can learn about your uh, you can design any product, you can design any parts that is basically related with your CATIA, ProE, SolidWorks. So you have to develop a skill in that particular segment. उसके बाद जो दूसरा segment, दूसरा job options है, stream है, that is your production profile. Production में next one that we have, that is your maintenance profile. Then we have quality and safety profile. Then we have
project management and planning. So these five are very common profiles that we usually see being a mechanical engineer. But उसके अलावा एक और प्रोफाइल है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल. Okay, and in that construction, if you can see here, there is one HVAC and chiller plant is there. So basically construction को हम जो समझते हैं, this is basically we understand it that is a part of civil, but ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ civil का part नहीं है. Construction it is also because in order to run that particular building को run करने के लिए, start करने के लिए, use करने के लिए, we need some other services also, and that is what उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल भी आएगी, प्लम्बिंग भी आएगी, फायर फाइटिंग भी आएगी, एंड एचवीएसी आल्सो कम्स इन दैट. सो एचवीएसी इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. अभी मैं आगे बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली एचवीएसी इज. मिस्टर सैमुअल, if you have any query you can just go to chat box and you can revert me with your query. So HVAC भी जो है उसी का एक फील्ड है. ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि HVAC क्या होता है. So इतने सारे ऑप्शंस में से हमें कोई एक राइट वन चूज करना है, एंड यू हैव टू चूज दैट स्ट्रीम ओनली वेयर यू कैन फाइंड अ प्रॉपर इंटरेस्ट. जहां पे आपका इंटरेस्ट होगा then only you can enjoy your job. Okay, so let's move ahead and see why HVAC as a career, why we can choose HVAC. HVAC को अपना कैरियर के तौर पे क्यों चूज कर सकते हैं? There are so many queries, so what I'm doing, I'm just trying to answer all your queries. Sana Habib have just asked that is there, yeah, there is one more person, Mr. Irfan is also there. He will be assisting you with all your queries. Okay, so this will be completely for the designing and drafting both we would be covering. So why we can choose HVAC as a career? HVAC को अपना कैरियर के तौर पे क्यों चूज कर सकते हैं? Because this is a one new emerging field of mechanical, and that is hardcore mechanical, where we can find that is your entire thermal energy, entire thermal engineering, it is there. So there you can find this is a new stream of mechanical. After that, there is no saturation as compared to the traditional stream of mechanical. The traditional stream that we have seen, it is the production, quality, maintenance, operations, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम नहीं है, तो इसके अंदर अभी जो सैचुरेशन है वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आया है. ओके, लेट अस मूव अहेड एंड सी दैट देयर इज अ ह्यूज स्कोप. इस फील्ड के अंदर ह्यूज स्कोप है एज ए कैरियर. व्हाई? बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस डे बाय डे. क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड आज से 20 साल पहले इफ यू ऑब्जर्व, very few people are using air conditioning, and it is a part of comfort, but nowadays it is a part of our day to day life. ये एक important हो गया कि that is the important basic need of for us. So हमारा standard of living increase हो गया, so we need one services which can compensate this one. Let us move ahead and see that is increase in global temperature of the earth. You can observe that due to global warming what happened, there is an increase in the global temperature. पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. तो हमें एक ऐसे सर्विस की रिक्वायरमेंट है जो क्या करेगा, जो उस चीज को कंपनसेट करेगा, हमारे लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करेगा. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमारे आसपास जो है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस का बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है. वी आर फाइंडिंग कि हमारे आसपास हर स्टेट, हर कंट्री, हर सिटी के अंदर देयर इज सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज देयर, द ह्यूज कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन. तो अगर ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी बिल्डिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड देयर एचवीएसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. सो इसलिए इस फील्ड के अंदर देयर इज अ ह्यूज स्कोप. इट इज नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्म. HVAC stands for heating, ventilation and air conditioning. So कहीं पे हमें heating की requirement होगी, कहीं पे हमें ventilation की requirement होगी, कहीं पे air conditioning की requirement होगी. So it is required each and everywhere, whether it is the colder place, whether it is a hotter place, और कहीं पे moderate temperature है, वहां पे भी ये required है क्योंकि वहां पे मुझे ventilation की requirement है. So in each and every application you can find this field of mechanical. हर किसी एप्लीकेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे वो R&D लैब हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मॉल हो, एयरपोर्ट हो, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो, anywhere, any application of the world you can find HVAC is there. Why? Because it creates a comfort zone for human as well as for industrial application also. एक और इसके अंदर बेनिफिट है HVAC के अंदर जो मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा. That is after few years of working experience, कुछ working experience gain करने के बाद you can do a startup in the same segment. आप एक entrepreneur बन सकते हैं, and that is what you can't do in other segments. Suppose अगर आप मारुति, if you are working in a Maruti company as a production in charge, so you can't start a car manufacturing company.
But being a HVAC engineer, after having a few years of industrial experience, you can do a startup. You can start your business in manufacturing. You can start your business in designing. You can start your business in your maintenance part. So many fields are there being a HVAC. I will discuss the different job profiles also. So you can become an entrepreneur, and that is the most advantage of this HVAC stream. This HVAC stream. Okay. Now let's move ahead and see. That is. Why, which is most important thing to get a job. Now this is the important thing for the fresh graduates and those who are undergraduates. Now I want some input from your side, that what is the most important thing to get a job. Yes, revert me, kindly go to chat box and revert me that what is most important thing to get a job. Yeah, so many answers that we got. It is majority the answer that we got, it is the skill and experience. So being a fresher, you won't be able to have a experience. Okay, being a fresher, you won't be having a skill, but you won't be having a experience. The major answer to get a job, it is your skills. So technical knowledge you have, technical knowledge you have from your engineering, because you have studied all the subjects thoroughly and you have the technical knowledge, आपके पास technical knowledge है. सो आपको स्किल्स डेवलप करना है. सो अगर स्किल्स डेवलप करने के लिए किस तरह का स्किल्स है, सो इज दैट स्किल्स विल गेट यू जॉब. क्या स्किल से जॉब मिल सकता है? इफ ओनली स्किल्स कैन गेट, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल जो है, इट विल बी अ लैडर, इट विल बी अ लैडर फॉर योर सक्सेस, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग. अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, इट इज नॉट दैट ओनली बाय कम्युनिकेटिंग यू कैन गेट अ गुड जॉब इन हार्डकोर hardcore technical segment. Okay, it is your, is that skills will get you a job? My answer, it will be a big no. Why? Because it's a job based skill, that what is being required in the industry, what is being required at the uh, what is being required in the job. So that is what you need. So unless until you learn that particular thing, that what is being required at the job, because definitely you have gone through the technical aspect, आपने technical aspect सारी कुछ पढ़ा, but उसे industry में apply कैसे किया जाता है. So that is your practical experience, practical implementation, and this is what it is being required at the industry. job के लिए यही required है कि what approach you have, आपके पास क्या अप्रोच है. डू यू हैव दैट अप्रोच, दैट हाउ यू कैन अप्लाई योर टेक्निकल नॉलेज इनटू ऑन द ग्राउंड लेवल. आप ग्राउंड लेवल पे जाके कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो you have to develop this job based skill, that what is being required at the industry, यही आपको डेवलप करना है, एंड यही विल बी ट्राइंग टू नर्चर यू. यही चीज हम आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाट विल बी ट्राइंग टू इम्पार्ट इनटू यू. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज के इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दैट इज द हायरार्की ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो can anyone have any idea that what is the hierarchy of any construction industry? First of all, we will start with a project, and that is, suppose we have IIT Delhi is there. IIT Delhi is there, and what IIT Delhi has just planned, they have just planned for one new library. They have just planned for न्यू लाइब्रेरी. आईटी दिल्ली ने क्या प्लान किया कि एक नया लाइब्रेरी बना. सो व्हाट आईटी दिल्ली विल डू, they will just assign some team members to execute it. एक टीम मेंबर को असाइन किया जाएगा कि आप इस लाइब्रेरी को एग्जीक्यूट कराएं. वी हैव दिस मच लैंड एंड वी वांट द लाइब्रेरी, द न्यू लाइब्रेरी, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय दिस टाइम फ्रेम. एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा, एक डेडलाइन मिल जाएगा, और एक कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी दैट यू हैव टू मेक इट इनटू अ कंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू मेक इट ऑपरेशनल. सो इन दैट केस व्हाट हैपन, उस केस में ये होगा कि वो जिस बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी, ही विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग. वो सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, सब चीजों को ऑब्जर्व करके क्रॉस चेक, ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरीवन. ओके, सो इन दैट केस क्या होगा कि
इसके नीचे क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट एक कंपनी को हायर करेगा जिसे हम कहते हैं पीएमसी, दैट इज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्लाइंट इसे हायर करेगा। क्लाइंट इसे क्यों हायर कर रहा है? बिकॉज क्लाइंट के एंड से जो टेक्निकल टीम थी, ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल द एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकता। सो फॉर दिस पीएमसी एंड द अदर स्ट्रीम, जो भी आगे नीचे आने वाली कंपनीज है, उसके लिए आईआईटी दिल्ली क्या हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली विल बिकम एज ए क्लाइंट। आईआईटी दिल्ली उसके लिए एक क्लाइंट होगा। IIT Delhi will become as a client, and this new library will become as a project for them. I hope you understand कि न्यू लाइब्रेरी है, इसके लिए प्रोजेक्ट हो जाएगा, और IIT दिल्ली जो है इसके लिए क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब इसके बाद जो लूप में आता है, दैट इज योर आर्किटेक्ट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट का रोल क्या है? कैन एनीवन हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्किटेक्ट? Which type of design actually they will produce? No, they will not do the structure design. The basic work of architect is to prepare a architectural layout. उसका काम जो है, that is your preparation of architectural layout as per client requirement. So I will write something here. That is your preparation of architectural layout as per clients requirement. Provide multiple options to the client. Provide multiple options to the client. ठीक है, आर्किटेक्ट का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज आर्किटेक्चरल लेआउट? आर्किटेक्चरल लेआउट किसे कहते हैं? आर्किटेक्चरल लेआउट इज समथिंग which contains that this is the entry from here, this is the reception desk, this is the waiting area, then we have your common lobby is there, then librarian cabin is there, this is the stairs, toilet, washroom. So ये जो डिजाइन करना होता है, that is your architectural layout. I believe this is clear to each and everyone. That is basically your architectural layout. ठीक है, इसके बाद जो आ रहा है, that is your, ये क्लियर। और ये क्या करेगा? दे विल प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को 2-3 ऑप्शन देगा कि दिस इज वन ऑप्शन इन विच यू कैन कंस्ट्रक्ट योर लाइब्रेरी, दिस इज द अनदर ऑप्शन इन विच यू कैन कंस्ट्रक्ट योर अनदर, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर लाइब्रेरी। 2-3 ऑप्शन देगा। जैसे कि हम लोग जब घर बनवाते हैं तो वी आस्क मल्टीपल डिजाइन ऑप्शन सो दैट वी कैन डिसाइड। इसमें से क्लाइंट क्या करेगा? इसमें से जो क्लाइंट है, जो इंड यूजर है, IIT दिल्ली क्या करेगा? उसमें से किसी एक चीज को, एक डिजाइन को चूज करेगा और अप्रूव करेगा दैट दिस इज द बेस्ट डिजाइन फॉर अस, दिस इज द best design for us, and that is what it is your multiple option, and this design it will be as per the architectural layout, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी कि from where it is the entry, where it is the exit, how exactly the building will look like. So that is the work of your architect. Now after that, civil consultant or structural consultant will come into the role. So what is the role of civil or structural consultant? इसका role क्या है? Can anyone have any idea that what is the role of civil or structural consultant? Yes. What is the role of civil and structural consultant? Yeah, got some multiple answers from your side. So material selection, so many answers. So basically the role of civil or structural consultant is to do a structure or civil design. That is, he's responsible for this. He's responsible for all the structure work, that how this building, whether in order to sustain that particular building, उस building को खड़ा रखने के लिए हमें क्या क्या required. So this structure design consists of what? It consists of your, and this civil or structure design will be done design on approved architectural layout. Approved architectural layout, and this basically includes that is your structure design includes what? They will decide your beam, that where exactly beam is required, where exactly column is required, then foundation किस तरीके से होना चाहिए,
फाउंडेशन कैसे होना चाहिए, then it is your material also, that is your material of construction. So all these things it will be done by the civil consultant. Okay, and you have just reverted. There are so many queries are there, so what I'll be trying to close all your queries once it is being done, because there are so many queries are there. Okay, so civil और structural consultant का ये रोल होता है. After that let's move ahead. Civil contractor. अब civil contractor क्या करेगी? They will just do the construction of the building. अब construction करने के लिए they will be taking the help of this approved architectural layout and structure design. तो construction of building as per approved architectural layout and structure design. अब building का जो construction है वो ready हो चुका है. If you want to use that particular building, what is required? अब हम इस building को use करना चाहते हैं, then what is required? Can we use that particular building now? Because the construction of the building is done. Yes, the construction of building is done. So can we use that particular building? अब क्या हम उस building को use कर सकते हैं? No. So many no answers are there. So what is required? What is required to start that particular building? इस building को use करने के लिए, इस building को use करने के लिए हमें यहाँ से दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. The first one that we have, that is your interior. It consists of your painting, glass, wooden furniture, or etc. Anything specific that we have. After that, we need another service that we call it as building services, and this is what here we are. यहाँ पे हम लोग stand करते हैं building services, and this building services includes your MEP. M stands for mechanical, E stands for electrical, and P stands for plumbing and firefighting. So अगर हमारे पास हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई इस तरह की सर्विसेज अगर हमें बिल्डिंग को रन करना है, then we must have this type of services. तब हम अगर हमें इस बिल्डिंग को रन करना है तो हमें इस बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग सर्विसेज होनी चाहिए, and that is your MEP. इसे हम MEP के नाम से जानते हैं. Okay. Let's move ahead. अब देखते हैं इस MEP को फर्दर क्लासिफाई करके कि दिस बिल्डिंग सर्विसेज इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायरफाइटिंग. मैकेनिकल के अंदर क्या है? HVAC आ रहा. दीज टू आर आवर बेसिक नीड्स. ये जो दोनों है ये हमारे लिए बेसिक नीड है, बिकॉज विदाउट दीज टू सर्विसेज वी विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट. दीज टू आर आवर बेसिक नीड. So without these two services, we will not be able to start. And this firefighting, it is a mandatory. Nowadays, it becomes mandatory requirement. Nowadays, it becomes mandatory. तो ये हमारे लिए एक mandatory requirement हो गई nowadays, and ये बेसिक नीड हो गया. सो व्हाई दिस HVAC इज इम्पोर्टेंट? व्हाई दिस HVAC इज इम्पोर्टेंट? HVAC क्यों इम्पोर्टेंट है अब बताएं. बेसिक नीड में इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है that is your from transformer to the power cable is there, sub distribution board, main distribution board, then cabling is there. So all these things comes under the electrical part. Plumbing, it is what? That is your water intake is there, that is your water supply or boring. Then we have water storage is there, toilet, washroom, drainage. All these things comes under the plumbing part. So unless and until we have these two services, we will not be able to start. अगर ये दो services हमारे building में नहीं है, we will not be able to run our building for a single day. हम एक दिन के लिए अपनी building को रन नहीं कर सकते. बट अगर हमें अपनी बिल्डिंग को रन करना है तो हमारे बिल्डिंग में ये दो सर्विसेज हैं, देन वी कैन स्टार्ट द बिल्डिंग. फायर फाइटिंग क्या है? आज के टाइम पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, दैट इज वी हैव टू टेक ए अप्रूवल फ्रॉम वेयर? वी हैव टू टेक ए अप्रूवल फ्रॉम NFPA, दैट इज योर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट. यहाँ से हमें अपनी बिल्डिंग का अप्रूवल लेना होगा कि हमारी जो बिल्डिंग है वो फायर के केस में सेफ है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई दिस HVAC इज इम्पोर्टेंट. HVAC इम्पोर्टेंट क्यों है? आई गॉट मल्टीपल आंसर्स फ्रॉम योर साइड, दैट इज फॉर ह्यूमन कंफर्ट.
it is not only for human comfort. HVAC जो है, it is not only for human comfort, because it creates a comfort zone for humans as well as industrial application. So it creates a it creates it creates a comfort zone, for humans and industrial application also. किसी पर्टिकुलर मशीन को चलाना है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करना है, सो वहां पे भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये ह्यूमन जोन के लिए भी एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी करता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक R&D लैब बनाना है, तो वहां पे जो हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कंफर्ट. ह्यूमन कंफर्ट से वो डिफरेंट है, एंड देयर इट इज क्रिएटिंग अ कंफर्ट जोन फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. उस एप्लीकेशन के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहा है. यही इंपॉर्टेंट है HVAC. मतलब HVAC इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दोनों के लिए कंफर्ट जोन होता है. एंड इन कंफर्ट जोन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीजेस. इन कंफर्ट जोन individual performance increases, and which ultimately increases the overall productivity of the building. Which ultimately increases the overall productivity of the building. पूरे बिल्डिंग की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. और यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, दैट वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एवरी कंस्ट्रक्शन हैज अ पर्पस, एंड व्हाट वी वांट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द इनपुट दैट वी हैव प्रोवाइडेड, एंड दैट इज व्हाट दिस HVAC will create. It will create a comfort zone, and by creating a comfort zone, the overall productivity of the building increases. पूरे बिल्डिंग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ एनी इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो कंफर्ट जोन के लिए हो, चाहे वो क्लीन रूम एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का एप्लीकेशन हो. ये सारी चीजें अभी आगे के सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, once we will be discussing the classification and categories of air conditioning. Okay, so this is what we will be trying to deliver in the coming sessions. Now let's move ahead and see आगे के पार्ट में मूव करते हैं. That is, in HVAC, what are the different categories of companies that we have? What are the different categories of companies that we have? So let us see the first category that we have, that is the HVAC consultant. Consultant का role क्या होता है? What exactly the consultant role is? कंसल्टेंट का रोल जो होता है, दैट इज जो डिजाइन एंड कॉस्ट कंसल्टेंसी. वो क्या करती है? प्रोजेक्ट को डिजाइन करेगी और उसके ऊपर कॉस्टिंग का एक एनालिसिस करेगी. दैट इज हाउ मच, राइट, दैट इज द जस्ट a Hindi translation that you have given Mr. Nikesh, that they will just do the designing work. They would not be using, वो ना प्रोडक्ट को यूज करेगा ना सर्विस को यूज करेगा. वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिजाइन करेगा कि किस तरीके से एयर कंडीशनिंग का डिजाइन होगा, और उसके ऊपर व्हाट विल बी द कॉस्टिंग ऑफ दैट. So that is the work of this HVAC consultant. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है, दिस ऑल आर द कैटेगरीज. सो लेट मी राइट हियर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज. So categories of companies इन HVAC में जो कैटेगरीज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. पहला कैटेगरी कंसल्टेंट का हो गया, जिसका काम क्या है? प्रोजेक्ट को डिजाइन करना. सो ये कैटेगरी, दिस इज अ टाइप ऑफ कंपनी. सेकंड वन, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? दैट इज योर इंस्टॉलेशन वर्क. ये उसके अंदर इंस्टॉल करेगा जो भी मशीन्स का. कंसल्टेंट का काम क्या है? वो सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि हाउ मच कूलिंग कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी इट इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज द वर्क ऑफ ए कंसल्टेंट. ये कंसल्टेंट का काम हुआ. सबसे पहले उसने ये डिसाइड कर लिया कि हाउ मच हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन, दैट इज रिक्वायर्ड
दैट इज योर, उसमें कौन सा इक्विपमेंट बेहतर होगा लगाने के, दैट इज द इक्विपमेंट सिलेक्शन। एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ड्राइंग, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ए कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट का काम हो गया। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? द वर्क ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज टू डू द इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। इंस्टॉलेशन इज समथिंग, जिस जो यूनिट इसने डिसाइड किया उसी यूनिट को ये साइट पे लाके, प्रोजेक्ट पे लाके इंस्टॉल कर देगा, एंड देन उस मशीन का टेस्ट करा के दिखा देगा। एंड कमीशनिंग, इट इज द ओवरऑल रनिंग ऑफ ए सिस्टम, पूरे सिस्टम को रन करके दिखा देना, दैट इज योर कमीशनिंग इज। बट ये जब इंस्टॉल करेगा, फॉर इंस्टॉलेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, एनीवन, एनी हैव एनी आइडिया? नहीं, देखिए डिजाइन तो ऑलरेडी कंसल्टेंट से मिल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, चीजों को समझने की कोशिश करना। डिजाइन तो डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट किट से मिल रहा है। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा? आई गॉट वन आंसर, दैट इज मटेरियल एंड मैन पावर, राइट। मैन पावर ये तो प्रोवाइड कर देगा, बट मटेरियल जो है, दिस कॉन्ट्रैक्टर दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोडक्ट ये नहीं बना रहा। फॉर एग्जांपल किसी रूम के अंदर हमें एक स्प्लिट एसी लगाना है, सो दिस कॉन्ट्रैक्टर दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द स्प्लिट एसी, ये स्प्लिट एसी नहीं बना रहा। सो दे वुड बी टेकिंग द हेल्प ऑफ द थर्ड सेगमेंट जो है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एचवीएसी इक्विपमेंट। वो मैन्युफैक्चर करेगा और एचवीएसी इक्विपमेंट्स को सप्लाई करेगा, यही एक मैन्युफैक्चरर का काम है, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरर का काम है। तो ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसी प्रोडक्ट को ये कॉन्ट्रैक्टर लेगा और फिर उसे इंस्टॉल करेगा। ये हो गया, तीसरी कैटेगरीज हो गई। द फोर्थ कैटेगरी दैट वी हैव, दैट इज द मेंटेनेंस, एंड दैट इज योर बिल्डिंग मेंटेनेंस, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ एंटायर बिल्डिंग सर्विसेज, जिसके अंदर एचवीएसी भी एक सर्विसेज, एचवीएसी भी एक सर्विस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार कैटेगरीज में हमने डिवाइड डिवाइड कर दिया। दैट वी हैव, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन। कुछ कंपनीज के नाम को भी मैं शेयर करता हूँ अलग अलग कैटेगरीज में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर कंसल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ यू टॉक अबाउट एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज की मैं बात करूंगा, सो इट विल बी योर एटकिंस, रैम्बॉल, WSP, Floor Daniel. So multiple companies are there. These all are MNC, multinational companies. ये क्या करती है? ये प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन कंपनीज में देखते हैं, if you Indian companies, the biggest consultant based in New Delhi, it is your Akon. Abid Hussain consultant is there. Then we have oldest consultant that we have, that is your Gupta consultant is there. Inner Save is there. इनर सेव इज देयर, सो मल्टीपल कंसल्टेंट्स आर देयर। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज में आप देखना चाहते हैं, तो वो एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट, इट इज योर EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। देन वी हैव HLL, HSCC. So all these are government agencies and they are involved in the designing and cost consultancy of any project. अगर कॉन्ट्रैक्टर में आते हैं, बड़े ब्रांड्स की मैं बात करता हूँ, so it will be your L&T, Larsen Turbo is there, Technip is there, Technip is there. Then we have Siemens is there. Samsung Engineering. Samsung Engineering is there. So all these are MNCs. अगर छोटे छोटे इंडियन ब्रांड्स की मैं बात करूं, so then we have AEPL, Unique Engineers, Advanced Ventilation, और अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज में बात करते हैं, तो EPI, दैट इज इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सो दैट इज वन एजेंसीज जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस सेक्टर में काम करती है। अगर मैन्युफैक्चरर के कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, सो इन दैट वी हैव MNCs, दैट इज योर Carrier is there, Train is there, York is there,
Daikin is there. So these all are international brands and they are the leader in that. इन सब में ये leader है. ये क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है और प्रोडक्ट को बेचती है, बस. That is the only work of this company. Apart from that, there are other companies also which are treated as आप अगर इंडियन ब्रांड्स में देखें तो if you see in Indian brands, that is your Voltas, LG, ब्लू स्टार, ये सारी जो है इंडियन ब्रांड्स है. ठीक है. दिस ऑल आर इसे जो हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरर को ओईएम कहते हैं. दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ओईएम. एक ओबीएम भी होता है. ओबीएम क्या होता है, सपोज मैं कैरियर में हूँ बट मैं ब्लू स्टार के लिए भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बनेगी बट हम अपनी फैक्ट्री में ब्लू स्टार का लोगो लगा के प्रोडक्ट उन्हें दे देंगे बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लू स्टार. सो दैट इज ट्रीटेड एज ओबीएम, अदर ब्रांड मैन्युफैक्चरर. और ओईएम क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो एक सबसे बड़ा नाम हमें दिखता है, दैट इज जो जेएलएल, जॉन लैंग लेसेले. वो क्या करती है, पूरी बिल्डिंग जो इंस्टॉलेशन हो गई है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग लग गया, इट इज डन फॉर 10 to 15 years. तो क्या करेगी ये कंपनी कि उसका पूरे मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी ले लेगी एंड दे विल बी जस्ट प्लेसिंग देयर एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, सबके टेक्नीशियंस होंगे, इंजीनियर्स होंगे एंड दे विल बी मेंटेनिंग द एंटायर प्लांट. पूरे प्लांट को मेंटेन करेंगे. So that is the maintenance, जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सर्विसेज. दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज यूटिलिटी सर्विसेज. यूटिलिटी सर्विसेज. ठीक है. तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज है. कुछ कैटेगरीज जो है, जैसे कि ये 3 कैटेगरीज आपने यहाँ पे देखा, ये 3 कैटेगरीज आपने देखा, वोल्टास, एलजी और ब्लू स्टार. ये 3 कैटेगरी आपका यू कैन फाइंड दिस हेयर ऑल्सो. ये एक कॉन्ट्रैक्टर भी है. मींस वोल्टास, ब्लू स्टार और एलजी क्या करती है, प्रोडक्ट भी बनाती है और उनकी एक सेपरेट डिवीजन है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है. बट कैरियर, ट्रेन, यॉर्क, टाइकिन ये क्या करती है, दे आर नॉट इनटू द कॉन्ट्रैक्टिंग डायरेक्टली. उनके डीलर्स होते हैं, उनके चैनल पार्टनर्स होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? राइट. सो लेट्स मूव अहेड. आगे मूव करते हैं. लेट्स मूव अहेड एंड सी के आगे. पहले सबसे पहले कुछ डिस्कस करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एचवीएसी इज. एचवीएसी होता क्या अभी तक, क्योंकि हमने एचवीएसी के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया कि एचवीएसी क्या होता है, उसके इंडस्ट्री के बारे में समझा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. दैट इज योर एचवीएसी एंड हियर वी कॉल दिस, यहाँ पे जो है ये एच है. एच स्टैंड्स फॉर योर हीटिंग. एच जो है दैट इज योर एच जो है हीटिंग को कहते हैं. हीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लेट मी डिस्क्राइब इन ब्रीफ. कि देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाना. एडिशन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एडिशन ऑफ थर्मल एनर्जी. एडिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को ऐड करना. देन इट कैन अकर नेचुरली ड्यू टू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन होने के कारण क्या होता है, दैट इज इट कैन अकर नेचुरली. It can occur naturally. So this is also a part of heating. Okay. Anything else you want to add here? Final temperature may or may not be as per human comfort. Final temperature may or may not be as per ह्यूमन कंफर्ट. फाइनल टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है, लेट मी राइट हियर. अगर मैं ह्यूमन कंफर्ट कहता हूँ, ह्यूमन कंफर्ट जब कहता हूँ, सो
ड्राइबल टेम्परेचर, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक में कि व्हाट इज ड्राइबल टेम्परेचर। इट विल बी फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 40% से 60%। ये हमारा ह्यूमन कंफर्ट होता है। तो फाइनल टेम्परेचर मे और मे नॉट बी एज पर ह्यूमन कंफर्ट, ये ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर हीटिंग पार्ट, इसे हम हीटिंग कहते हैं। उसके बाद लेट अस सी एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं। वेंटिलेशन को मैं फिर से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। दिस वन इट इज योर ventilation, sorry, air conditioning. एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, दैट इज योर temperature control is there, we can just control the temperature. Then we have humidity control. ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो ह्यूमिडिटी कंट्रोल इज देयर। टेम्परेचर कंट्रोल मतलब टेम्परेचर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी योर हीटिंग ऑल्सो, इट कैन बी योर कूलिंग ऑल्सो। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल मतलब इट कैन, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी योर, it can be your humidification also, humidification also, और it can be your dehumidification। ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना ह्यूमिडिफिकेशन कहलाएगा, और ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना dehumidification कहलाएगा। ठीक है, it maintains a proper flow of air, it maintains a proper flow of air, एयर के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रूम का सेक्शनल व्यू मैं दिखा रहा हूँ, ये सेक्शनल व्यू है, एलिवेशनल व्यू है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक स्प्लिट एसी लगा दिया यहाँ पे। सपोज दिस इज योर स्प्लिट एसी। सो ये स्प्लिट एसी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये स्प्लिट एसी यहाँ से कोल्ड एयर सप्लाई कर रहा है, दिस इज योर सप्लाई, और इधर से ये रिटर्न ले रहा है, दिस इज योर रिटर्न। तो एयर का एक फ्लो मेंटेन हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड रिटर्न। एंड लास्ट वन दैट वी हैव हियर, इट इज योर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। और nowadays ये बहुत इंपॉर्टेंट है, with the coming of covid this is the important part, purification of air, that is air purification, filtration level and all these things are there which is required for the purification of air. So air purification के लिए ये important हो गया। So ये जो part है, this is your एयर कंडीशनिंग का पार्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पे, that is what we call it as air conditioning। ठीक है, let's move ahead and see the third part that we have, that is your ventilation part, जो हम यहाँ पे देखना है। this is your ventilation। ventilation, so ventilation किसे कहते हैं, anyone have any idea, ventilation किसे कहते हैं? yes, flow of fresh air। let us see ventilation किसे कहते हैं। वेंटिलेशन जो है, अगर सिंपल वर्ड में डिस्कस किया जाए, इट इज अ मूवमेंट ऑफ एयर, इट इज अ मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब एयर का मूवमेंट को हम वेंटिलेशन कहते हैं, तो इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, it can be from outside to inside,
बाहर से एयर को अंदर भी हम, क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर है, बाहर से एयर अंदर भी आ सकती है, इट कैन बी दैट। अगर बाहर से एयर अंदर आ रही, सो इट विल बी योर फ्रेश एयर। ये भी एक वेंटिलेशन का पार्ट है। एंड इट कैन बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। अगर अंदर से एयर बाहर कर रहे हैं, सो दैट विल बी योर एग्जॉस्ट एयर, जो हम टॉयलेट के केस में यूज करते हैं। टॉयलेट के केस में एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वो क्या करता है, टॉयलेट के एयर को बाहर एग्जॉस्ट कर देता है। सो यही वेंटिलेशन कहलाता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मूवमेंट ऑफ एयर movement of air, why it is that, suppose हमने विंडो ओपन किया, we found that air from outside will enter inside, बाहर से एयर अंदर आ रही, ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? movement of air depends upon pressure difference, right? Movement of air depends upon number one that we have, that is your pressure. So air will always move from high pressure to low pressure, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। दूसरा जो है डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो, डेंसिटी ऑफ एयर that is from high density to low density, high density to low density, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। बट इसमें से जो मेजर फैक्टर है, दिस वन इट इज योर मेजर वन, ये जो है दिस इज द मेजर फैक्टर। सो जब हमने विंडो ओपन किया, व्हाट वी फाउंड, एयर फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इनसाइड। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज्यादा था, रूम के अंदर जो प्रेशर था वो कम था, सो एयर बाहर से अंदर आ गया। अगर हमने क्या किया, रूम के अंदर एक फैन लगा दिया, प्रेशराइज्ड फैन, एंड इफ यू आर रनिंग दैट पर्टिकुलर फैन, देन व्हाट हैपेंड, रूम के अंदर हमने प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर दिया एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो यही केस है एयर के मूवमेंट के लिए, दैट इज इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इट कैन बी फ्रॉम इनसाइड टू। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, इसके आगे मूव करते हैं एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल इन एचवीएसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज अभी तक आपने इसका इंपॉर्टेंस समझा कि दिस इज द इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ मैकेनिकल, यू कैन परस्यू योर कैरियर इन दिस, देयर आर मल्टीपल जॉब, देयर मल्टीपल, there is no saturation as compared to other traditional stream of mechanical, but इसमें कितने तरह का जॉब प्रोफाइल्स है, let us see। अगर आप कंसल्टेंट के यहाँ पे हैं, so in consultant we have sales profile is there, so that is the work to the main role of this sales profile is to get work from the client for the designing, क्योंकि इसका काम जो है वो डिजाइनिंग का काम है। then we have design profile, so the work of this design profile is to make the design, जो डिटेल डिजाइनिंग करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है दैट इज योर एस्टिमेशन प्रोफाइल, ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन करेगा। एंड दैट इज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल, जो क्या करेगा, ऑन साइट दे विल जस्ट मॉनिटर द एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। ये कंसल्टेंट के यहाँ पे इतने तरह का जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल, दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर क्या है, सेल्स प्रोफाइल इज देयर। इसका ये काम क्या करेगा, दैट इज द वर्क ऑफ दिस प्रोफाइल इज टू डू द टेंडरिंग, टेंडर का पार्ट करेगा, प्रोजेक्ट को बिड करेगा, बिड करने के बाद इंस्टॉलेशन का वर्क लेके आएगा ये अपनी कंपनी के लिए। देन वी हैव एस्टिमेशन प्रोफाइल, टेंडर को फिल करने के लिए ही विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ दिस एस्टिमेशन टीम, जो इसको हेल्प करेगी कॉस्टिंग करने के लिए। देन वी हैव डिजाइन टीम, अब ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन हो चुका था, यहाँ पे क्या डिजाइन हो रहा है, यहाँ पे डिजाइन मॉडिफिकेशन और डिजाइन चेंजेस किया जा रहा है, जो कि
जो कि इस कंसल्टेंट ने बनाया था व्हेन व्हेन द बिल्डिंग वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उस वक्त इसने डिजाइन बनाया था। बट ये जब डिजाइन का काम कर रहा, ये तब काम कर रहा जब बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन का काम हो रहा। सो दिस डिजाइन टीम विल डू द मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस, बट दे विल टेक अप्रूवल फ्रॉम द कंसल्टेंट इटसेल्फ। उसके बाद प्लानिंग टीम है। प्लानिंग टीम क्या करेगी? प्रोजेक्ट का प्लानिंग करेगी, एग्जीक्यूट शेड्यूलिंग करेगी, दैट व्हेन एंड हाउ द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। प्लानिंग के अंदर आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का सब्जेक्ट या ऑपरेशन रिसर्च आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे सीपीएम और पर्ट मेथड पढ़ा होगा कि द शॉर्टेस्ट पाथ इट विल बी द बेस्ट पाथ फॉर अस, जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट और लीस्ट टाइम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। दैट इज बेसिकली आवर प्लानिंग टीम। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टीम है। प्रोक्योरमेंट टीम क्या करेगी? प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेगी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करेगी। जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, दे विल ट्रांसफर देयर इंक्वायरी टू द परचेज टीम टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी? ये इंस्टॉलेशन करा देगी साइट के ऊपर। दैट इज बेसिकली योर ये इंस्टॉलेशन टीम क्या हो गया? इंस्टॉलेशन टीम मतलब प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी? इंस्टॉलेशन कराएगी साइट पे, जो भी प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करने के लिए डिजाइन को देखेगी और प्रोजेक्ट प्लानिंग को ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद जो है सर्विस टीम है। सर्विस टीम क्या करेगी? जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाता है, देन इट्स कम्स टू द रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस टीम। ये क्या करेगी? ये उसको सर्विस टीम ये उसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, सर्विसिंग का कॉस्ट होगा, दैट इज बेसिकली द आफ्टर सेल्स पार्ट। सेल्स के बाद मतलब इंस्टॉलेशन के बाद का जो रोल है वो सर्विस टीम की होगी। दैट इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर मेंटेनेंस। पूरे मेंटेनेंस प्लांट का मेंटेन करेगी जितने भी साल के लिए आप सर्विस कराना चाह रहे हैं। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरा कैटेगरी जो हमने देखा, दैट इज योर एचवीएसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स आपको क्या मिलेगा? एक तो सेल्स का मिलेगा। ये जो दोनों सेल्स था, दिस इज द सेल्स ऑफ ए सर्विस। ये अपने डिजाइन को सेल्स कर रहा था, ये अपने इंस्टॉलेशन की सर्विस को सेल कर रहा था, ये अपने डिजाइन की सर्विस को सेल कर रहा था। बट ये जो सेल्स कर रहा है, दिस इज द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड दैट इज दे विल सेल देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। द पर्सन इज फ्रॉम चिलर, दे विल सेल द चिलर, समवन इज फ्रॉम द एचयू बैकग्राउंड। सो जो जिस इंडिविजुअल कंपनी से होगा, अपने अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोफाइल है। They will provide the technical support to the sales team. Then we have the R&D facility. R&D team will do research and development on their product so that their product can become better than their competitors. And there is one more service. इस service और इस service में ये difference है कि this service, can anyone say what is the difference between this service team and this service team? Yes, anyone? See, be attentive in this training program, because at the end of training program, we would be having one assessment test also, and that assessment it will be from all the things that we have discussed in training program, and it will let you to uh, enter into a competitions where you can win a prize worth 1 lakh rupees also. Okay, so be attentive. So what is the difference between this service and that service? दिस सर्विस इट इज द ओवरऑल सर्विस ऑफ ए एंटायर प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट की सर्विस है। पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी इशू होता है, दिस सर्विस टीम विल टेक केयर, एंड दिस सर्विस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। पंप वाला अगर है तो वो सिर्फ पंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पूरा सिस्टम नहीं चल रहा, दे विल नॉट बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर सर्विसेज। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि इसके अंदर जो ये जो जॉब प्रोफाइल है, दिस इज योर field job. You have to be on field. फील्ड के ऊपर जाके आपको जॉब करना मीन्स यू हैव टू मीट द कंसल्टेंट, यू हैव टू मीट द क्लाइंट, यू हैव टू मीट द कॉन्ट्रैक्टर, एंड यू हैव टू क्रिएट अ रेवेन्यू फॉर योर ओन कंपनी। अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। इसके बाद ये जो प्रोफाइल है, दिस इज योर डिजाइन एंड एस्टिमेशन, और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन एस्टिमेशन, डिजाइन, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, परचेज, इतना प्रोफाइल। एंड हेयर वी हैव एप्लीकेशन एंड R&D। सो ऑल दीज आर ऑफिस जॉब। ये सारा जो है, these all are your office job. So you should be, you have to go to office for a particular time period and then you have to do. उसके बाद जो लास्ट प्रोफाइल मैं आपको शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, that is your project management, project service and service. So all these are on-site job, which is marked in orange. So these are on-site job.
ठीक है। सो कुछ जॉब जो है वो ऑफिस का जॉब है, कुछ जॉब ऑन द फील्ड जॉब है, and कुछ job on site job है, you have to be present on the site at any time. So that is your project management, project service और service, these profiles are there. I hope this is clear. जो चौथी कैटेगरीज मैंने डिस्कस किया था, that is your मेंटेनेंस, उसके अंदर एक प्रोफाइल सेल्स का होगा, एक प्रोफाइल मेंटेनेंस का होगा। सेल्स का इसी तरीके से ऑन फील्ड होगा, मेंटेनेंस का क्या होगा, ऑन साइट जॉब होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? There is one query that how procurement and purchase it is different. Okay, let me answer. Procurement और purchase कैसे different है? Let me answer your queries that procurement and purchase it is different because procurement team what they will do, suppose उन्हें एक requirement मिला अपनी planning team से कि they want this product to be on site by this particular date. Planning team ने अपनी एक requirement दी procurement team को कि मुझे ये प्रोडक्ट इस साइट में इस डेट पे चाहिए। सो व्हाट प्रोक्यूरमेंट टीम विल डू, they will just check that whether this unit is available with them, उसके पास ये यूनिट है उसके गोडाउन में या उसके स्टॉक में। सो दे विल प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके रख लिया, दैट इज असाइन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है देन परचेज टीम इज देयर। परचेज टीम क्या करेगी, वो फिर परचेज करेगी। कहाँ से परचेज करेगी, इस मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगी। इज दिस क्लियर टू द पर्सन हु हैज जस्ट आस्क्ड दिस क्वेरी? अगर साइट पे आप देखें, साइट जैसे ये साइट प्रोजेक्ट का जॉब है तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साइट सुपरवाइजर इज देयर, साइट इंजीनियर इज देयर, प्रोजेक्ट इंजीनियर इज देयर, प्रोजेक्ट मैनेजर इज देयर, प्रोजेक्ट हेड इज देयर। सो इतना लेवल हो सकता है वो किसी भी प्रोफाइल पे। तो ये डिफरेंट जॉब प्रोफाइल से इसमें लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सीनियर इज देयर, जूनियर इज देयर, ट्रेनी इज देयर, सो दैट you can create at different profiles. I believe this is clear to each and everyone. Okay, आगे मूव करते हैं। That is now there comes a question in your mind that who we are. So we are a group of working professionals from different industries. We have a wide experience of over means if we combine all the persons who are into that, they all are from the industrial background and they have worked on different national and international projects. So we are a group of working professionals from different industries having expertise in our respective field. If someone is having expertise in the installation part, if someone is having an expertise in the design part, so we are from that segment. We will not teach you, because we are not a professional teacher. There is a difference between teacher and trainer. Teacher is something what they have studied in their curriculum and from their books. They will definitely try to deliver that in the best way. But what we will do, we will train you. We will not teach you, we will train you, and we will train you as per the industrial requirement जो कि अभी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। Suppose if you would be hired at L&T, so what they would be expecting from you, वो आपसे क्या expect करेंगे day one से कि आपको क्या आना चाहिए, वो चीज हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। And that is what and how we can try to train you. All the training it will be as per the industrial standard. हम सारी चीजों को industrial standard को follow करेंगे so that you would be aware about, आपको ये पता चले कि इंडस्ट्री में किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे डिस्कस करते हैं हमारी सर्विसेज क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, हम लोग क्या क्या करते हैं। वी आर इनटू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट हुआ जो कि हम फ्रेश ग्रेजुएट और वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी हैव ट्रेन्ड ओवर 5,000 professionals over the globe in more than 23 countries. We are providing training. ये ट्रेनिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, एंड इवन इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हम ट्रेनिंग देते हैं। वी हैव डिलीवर्ड ट्रेनिंग इन मारुति, वी हैव डिलीवर्ड ट्रेनिंग इन Breyer, we have delivered training in many HVAC contracting company based in India, and we have also delivered corporate training in Abu Dhabi also. We have provided training in China also, in Hong Kong also. So multiple trainings that we have already given over the globe. दूसरा पार्ट है हमारा कंसल्टिंग, दैट एज आई सेड यू कि हम लोग एक MEP कंसल्टेंट है, हम लोग MEP के प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं। सो व्हाट वी वुड बी ट्राइंग टू डू, वी वुड बी ट्राइंग टू इन्वॉल्व यू इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वैसे प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको एक रियल टाइम सिनेरियो पता चलेगा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से क्या कंस्ट्रेंट आती है।
And third one, based upon the links that we have, we'll be definitely assisting each and everyone in the placement, in the interview opportunities, because अभी तक हमने within India and outside India more than 1000 plus लोगों को जॉब में assist किया है. So that is what we'll be doing. So these are the three segments in which we are working right now. Now let's move ahead. Let's see what we do. Basically, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो it can be your classroom training, it can be your on-site training, and it can be your corporate training. जो कि मैंने अभी आपको बताया. We had a very wide range of certified trainers जो अलग-अलग regions में अलग-अलग specific part को देखते हैं. Definitely, you can apply, Sanavi. Since this training program, we will assist you in the job also. You can send your CVs, updated CVs and resume to jobs at the rate comfortdesign.in. We will definitely try to assist you in that. So अब तक हमने more than 5000 professionals को trained किया in 23 countries. We are operational in Australia also. We are operational in New Zealand also. We are operational in all Middle East countries. We are operational in UK also, US also. So many countries we are operational, and we are providing online training over there. In this particular segment, we are having expertise in this building services only. So we will be providing the training in this segment only. Okay. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव. द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट okay, the main objective is that we will try to link the theoretical and practical. आपने थ्योरी पढ़ी है इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा में, that is what we will be trying to link that. आपने VCRS साइकिल पढ़ा वहां पे, but you don't know how we can apply, how we can increase the COP. हमें क्या करना होगा कि हम उसकी coefficient of performance को increase कर सकें, and that is what we will be trying to impart in you कि हम कैसे theoretical और practical को अप्रोच को डेवलप करें. थ्योरेटिकल यू हैव, प्रैक्टिकल यू हैव टू लिंक, मींस यू हैव टू ब्रिज अप दैट पर्टिकुलर गैप. वो गैप को हम लोग फुलफिल करेंगे. सेकंड वन, हम वी विल इनवाइट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री सो दैट आपको इंडस्ट्री के न्यू थिंग्स और न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलेगा. सो दैट विल बी अ वन न्यू सेगमेंट दैट वी हैव, दैट इज योर गेस्ट लेक्चर फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट. वी ऑल आर आल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट अभी का अपडेट आपको अगर जानना है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, सो वी विल बी इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ टू ट्रेन यू इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. नेक्स्ट वन, इट इज योर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड. सारे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा सो दैट आपको उसके बारे में अवेयरनेस पता हो. बिकॉज वंस यू गेट इनटू द जॉब, whether it is government sector, whether it is private sector, because it is not limited with the private sector only. We have discussed, we have many agencies like EIL, EPI, HLL, HSCC, all these are government agencies, those who are working in this particular segment, building services. So आपको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, आईएस स्टैंडर्ड क्या कहता है, आईएस कोड क्या कहता है, और भी जो स्टैंडर्ड्स है, स्मैकना स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, वो सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू मेक यू अवेयर अबाउट दैट. नेक्स्ट वन, इट इज योर साइट विजिट. वंस आपने थ्योरेटिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि किस तरीके से ये सारी चीजें डिजाइन होती है. ओके. अब उसी चीज को प्रैक्टिकली साइट पे देखने के लिए किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, फॉर दैट वी हैव अरेंज सम साइट विजिट्स आल्सो. साइट विजिट किया जाता है लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर. वी विल बी ट्राइंग टू मेक यू वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हम भी आपको कुछ एक प्रोजेक्ट्स देंगे जिसके ऊपर आपको डिजाइन करना होगा. दैट इज योर लाइव प्रोजेक्ट्स. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज देयर बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस. विल बी जस्ट ट्राइंग टू असिस्ट यू इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आल्सो. आप इंडस्ट्री में जाएंगे और एक्चुअली काम करेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट कि आप एक दिन गए और यू विल गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर 30 days. Believe me, you all are my juniors, and what I try to say that don't run after the certificates. Only and only your knowledge and skill will help you a lot in getting a job or in upgrading yourself. सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही एक इम्पोर्टेंट चीज है. सर्टिफिकेट्स, यू कैन गेट n number of certificates, but the major thing it is your knowledge and skill, and that is what you have to focus. आफ्टर दैट इट इज योर कम्युनिकेशन स्किल. हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश बोल रहे. कम्युनिकेशन स्किल इज दैट हाउ यू कैन कम्युनिकेट विथ योर टीम members, how you can communicate with your customers, client. So how expressive you are. आप अपने टेक्निकल नॉलेज को आगे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, and that is what it is. That is what it is. It is your communication skill.
लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर कंप्लीट डिजाइन का पार्ट होगा, जिसके अंदर हीट लोड कैलकुलेशन विल बी देयर एंड ऑल दिस कैलकुलेशंस विल बी देयर। ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट, दैट इज बेस्ड अपॉन ऑल दीज थिंग्स विल बी डेफिनेटली असिस्टिंग यू इन द प्लेसमेंट असिस्टेंस। दिल्ली एनसीआर में इन एचवीएसी सेगमेंट, पर्टिकुलरली इन एचवीएसी सेगमेंट, there is no company where our students are not there। हमने दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनीज वी हैव आवर स्टूडेंट्स, हमने वहां तक सारे लोगों को प्लेस्ड किया है। सो दैट इज आवर यूएसपी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दैट इज इन ईच एंड एवरी कंपनी आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग देयर। So we feel very much privileged that we have provided, we have trained them। Okay, now let's move ahead। What you will learn in the advanced training program, that is for the 2 and 3 months। So अगर आप डिजाइन का पार्ट में देखेंगे तो हीट लोड कैलकुलेशन है, जहाँ पे कितनी कूलिंग या हीटिंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है ये पता चलेगी। देन इक्विपमेंट सिलेक्शन इज देयर। इक्विपमेंट सिलेक्शन में आपको क्या पता चलेगा, that is your which equipment that we will select, चाहे वो चिलर है, AHU है, FCU is there, pump is there, cooling tower is there, then fans are there, humidifier, dehumidifier, ये सारे यूनिट्स का सिलेक्शन आप देखेंगे मैनुअली, that how we can decide which is the best equipment। next one it is your duct designing। डक्ट डिजाइनिंग देखेंगे। डक्ट क्या है, एक ऐसा कंड्यूट या पैसेज है जिसके थ्रू हम एयर का मूवमेंट कराते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एज यू कैन गो थ्रू द शेड्यूल, वी हैव सम सेशंस ऑन डक्ट डिजाइनिंग आल्सो। देन वी हैव पाइप डिजाइनिंग, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी विल सी द पाइपिंग पार्ट, कि हम किस तरीके से पाइप को डिजाइन करेंगे, वेदर इट इज चिल वाटर पाइपिंग, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग या ड्रेन पाइप, इनका डिजाइन किस तरीके से करेंगे। वीआरवी डिजाइन, दैट इज जो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, इसका डिजाइन हम किस तरीके से करेंगे। वेंटिलेशन डिजाइन किस तरीके से करेंगे, दैट इज योर मूवमेंट ऑफ एयर, चाहे वो कार पार्किंग हो, बेसमेंट हो, टॉयलेट हो, किचन हो, देन एनी फैक्ट्री इज देयर, सो वहां पे कैसे करेंगे। और लास्ट में बीओक्यू। तो पूरे डिजाइन के पार्ट को हमने 7 बुलेट्स में डिफाइन किया है कि हम किस तरीके से करेंगे डिफाइन। ठीक है, अब अगर आगे मूव करते हैं, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यू थिंग, दैट इज योर ड्राइंग्स एंड ड्राफ्टिंग। इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, इक्विपमेंट्स का पोजीशनिंग किस तरीके से करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे करना है, दैट इज बेसिकली योर जीएडी, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। देन पाइपिंग लेआउट इज आल्सो देयर, पाइपिंग में किस तरीके से करना है। देन डक्टिंग का लेआउट ड्राइंग किसी, ये ड्राइंग से प्रोसेस फ्लो, ऑल दिस थिंग्स इट विल बी कवर्ड विद बेसिक ऑटोकैड। पहले आपको बेसिक ऑटोकैड होगा and then we will see all these things, it will be discussed with reference to industry level पे जाके डिस्कशन होगा। आपने कैड को सीखा होगा, बट आपने कैड को वैसे नहीं सीखा जैसे इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेरी कहता हूँ, यू कैन जस्ट डू द एनालिसिस। जो जिन लोगों ने भी कैड को किया है, आई बिलीव ईच एंड एवरीवन हैज डन सम कैड कोर्सेज आल्सो। ओके, सो आर यू एबल टू डू, सपोज आपको एक ड्राइंग दिया जाए एंड सपोज आपको एक ड्राइंग दिया जाए एंड यू आर जस्ट आस्क्ड टू प्रिंट दैट ड्राइंग। आपको उस ड्राइंग को प्रिंट करना है 1:100 के स्केल में A0 की फाइल पे। आर यू एबल टू डू दैट? आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने कैड को सीखा सिर्फ कमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कैड को सीखा कमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैवंट लर्न द कैड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एक ड्राइंग को, इंजीनियरिंग ड्राइंग को, उसको A0 के फाइल पे 1:100 के स्केल में प्रिंट करना है। ये नहीं सीखा आपने, सीखा C इंटर, L इंटर, P इंटर। फ्रॉम देयर यू कैन डेफिनेटली मेक द ड्राइंग्स, आप ड्राइंग को बना सकते हैं, बट उस ड्राइंग को आप 1:100 के स्केल पे ऑटोकैड के ऊपर कैसे प्रिंट करेंगे, A0 के फाइल पे या किसी और के फाइल पे। Okay, don't worry for the attendance. We have this software will give us the attendance for 2 days. Okay, don't worry for that, Mr. Sagar brother। ठीक है, उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, that is your E20 sheet, Excel sheet is there, this is used for heat load calculation। then HAP software is there, that is your hourly analysis program। ये क्या करता है, hourly basis पे आपका hourly basis पे it will just do the हीट लोड कैलकुलेशन। उसके बाद डक्ट साइजर है, जिससे आप डक्ट का साइजिंग करेंगे। पाइप साइजर है, पाइप की साइजिंग करेंगे। साइकोमेट्रिक इज देयर, जिससे आप साइकोमेट्रिक प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे। देन वी हैव वेडको सॉफ्टवेयर, जहां पे आप वेदर डेटा को
डिटरमाइन करेंगे। एंड लास्ट वी हैव इक्विपमेंट सिलेक्शन, जहाँ पे आप ये जो इक्विपमेंट सिलेक्शन मैनुअल देखा था उसी का हम चिलर का सिलेक्शन देखेंगे कि चिलर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एचयू को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, वीआरवी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स दैट we would be seeing in the coming up session. राइट, देयर इज वन क्वेश्चन दैट हम ये सारी चीजें 15 दिन के अंदर कैसे कवर करेंगे। यू जस्ट गो टू द शेड्यूल, शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे वी हैव स्किप समथिंग, हमने कुछ कुछ चीजों को स्किप किया है, इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कमिंग 15 डेज। सारी चीजों को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है विद इन 15 डेज, ठीक है। बाकी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेक्निकल प्रोडक्ट कैटलॉग्स मिलेगा, रेफरेंस प्रोजेक्ट्स मिलेगा। एंड इससे हैंडबुक्स हैं जो इंडिया में यूज किया जाता है, वो इशरे हैंडबुक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। एशरे जो है दैट इज इट इज यूज्ड इन your international, that is your American Society of Heating Refrigeration and Conditioning Engineer, and career handbook is there which is used national as well as international, हर जगह पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके आगे दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ लास्ट 4 years that we did। हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, मशीन्स का एक्सप्लेनेशन किया है, साइट पे विजिट करके साइट के इंस्टॉलेशन को डिस्कस किया है, सो कॉन्फ्रेंसेस किया है, सेमिनार्स किया है। So that is what we did in the last 4 years. Now if you have any query, this is all done for today from my side. If you have any query, you can ask your queries. I am okay with introduction lecture I missed. So today it is the first session that we have. Yesterday due to some technical glitch we are unable to have the session, so don't worry for that. Today sir we have semester examination for some of other project days. So which branches? See, this internship program, it is beneficial for each and every branches except computer science, IT and electronics. Those who are from computer science, IT and electronics, they are not getting any benefits from this. But apart from that, if someone is from mechanical, electrical, civil, architecture, chemical, petroleum, they all are able to understand all these things, and it will be helpful for them also. When would certificate provide? You can get the certificate once you everything it is being communicated in the mail, so you just go through that. I believe by 20th of this January you will receive all the certificates on your mail. See, this 15 days internship program, that will just boost up your knowledge, and it will definitely, suppose if you have the courage, if you have the skills, then definitely this 15-day will play a very important role during the interview, that you have some basic idea of this HVAC branch. Someone is asking for the recorded lecture, so it is not possible for us to send recorded lecture to more than 1000 candidates that we have shortlisted. Okay, so it's as I said you that we would be just discussing some selected topic. You just go through the syllabus that is being shared with you. That is what we'd be discussing. वही हम discuss करेंगे, and because we have some time constraint also, and this is under the CSR activity, corporate social responsibility activity. So we'll be just trying to discuss maximum that we can discuss with you, because this is what I want, that these things you must know being in the college itself. कॉलेज से निकलने के बाद आप इन चीजों के ऊपर रिसर्च करके फिर आगे डिस्कस करें, उससे बेहतर है कि कॉलेज में ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा। Class timing, it is fixed. For any update you can just join the our telegram channel also. So those who did 15 days internship program, and they would be eligible for a competition that we would be having, and in that we would be having a competition. The top 3 performers will get a prize worth 1 lakh rupees, and others will be assisting each and everyone in their final year project, in their placement activities also would be assisting them. So don't worry for that. You can have your mail ID. Okay, so
Thanks a lot for your time. And if you have any queries, you can just write a, you can drop a mail to us, info@comfort design. उस पे आप अपनी queries को drop कर सकते हैं. Our concerned team shall get back to you. Okay. So it's a wonderful session having an interaction with all of you guys, and I believe it is beneficial to each and everyone. Let me introduce myself also. Someone has asked my name. Myself, Iftakhar Ahmed, and I'm the just founder of this Comfort Design. I had an experience of over 9 years in this HVAC industry, and I had trained over more than 5,000 professionals individually over the globe in more than 23 countries. I just represented India in China in 2017 and 18 for a global technical meet there. So I'd be the only person who is representing India over there in China in 2017 and 2018 in the global technical meet that we have. Okay, thanks a lot, and see you all tomorrow at same time, that is 11 a.m. I believe this session, it is useful to each and everyone. Telegram channel you can have, we will, someone has just shared in the chat box also. Attendance, it is already done because this software will do the attendance automatically. Okay, thanks a lot. AutoCAD basics and all these things, softwares we would be sharing with you. Don't worry for that. We will share all the softwares with you that we would be discussing. जो भी हम discuss करेंगे वो software हम आपके साथ share करेंगे. Don't worry for that. Okay, thank you and thanks a lot. Bye, take care. See you all on tomorrow. Make sure जो आपके friends आज attend नहीं कर पाए, they invite them also to attend that, because this is just a uh, that is what we will be sharing our experience. जो हमने सीखा वही हम आपके साथ share करेंगे. So don't hesitate to share all these things with them. Okay, thank you.